Hello students, the question is, in Balmer series of hydrogen atom, as the wavelength of spectral lines decreases, they appear option A equally spaced and equally intense, option B further apart and stronger in intensity, option C closer together and stronger in intensity, option D closer together and weaker in intensity. So the problem is based on the topic atoms and in particular the Balmer series of hydrogen atom. Now it is asked in this particular problem that as the wavelength decreases, what happens about the lines, the spacing of the lines and the intensity. So you can see from this particular diagram that these are the different energy levels. For example, n equals to 1 level, n equals to 2, n equals to 3, 4, 5, 6, 7 and so on up to infinity. So according to the value of n, the principal quantum number, the energy of this nth orbit corresponds to minus 13.6 upon n square electron volts. This value is in electron volts. Now n equals to 1 corresponds to the ground state. So ground state is minus 13.6 electron volts. N equals to 2 corresponds to minus 3.4 electron volts according to this formula, and n equals to 3 corresponds to minus 1.512 electron volts and so on. The Balmer series corresponds to the transition from the higher levels such as n equals to 3, 4, 5, 6, 7 and so on up to infinity to the level n2. It means that when the electron jumps from the higher states such as n equals to 3, 4, 5 and so on up to infinity to the state n equals to 2, then the photon which we get, the wavelength corresponding to that photon we get corresponds to the Balmer series, and this series corresponds to the visible part of the spectrum. Different colors we get corresponding to different jumps of the electron from higher state to the n equals to 2 state. So this is the first excited state. So according to the problem, the wavelength decreases. The wavelength decrease means as we go higher up, wavelength, if you see the formula of energy and wavelength, the wavelength is inversely related to the energy. So as we go higher up, the energy goes up and the wavelength goes down. So as we go higher in this particular level, the energy level, or we can alternately say that as we go lower in wavelengths, so you can easily see that the spacing between the levels or these lines becomes narrow. They are closely spaced as we go up. So this is the basic thing that we have to understand, that these lines become closer with respect to each other. So closer together. So among these options, the closer together, it may be option C or D, closer together. The lines becomes closer together. Now among these two options C and D, we have to check whether the line intensities, intensity of the particular wavelengths of the light which is coming out, whether it is stronger or weaker. So in terms of intensity, we have to judge. So as we go higher up in the energy levels, the transition corresponds to smaller energy difference. So for example, there is a transition from a higher level n equals to 7 to n equals to 6. So n equals to 7 corresponds to minus 0.278 electron volts and n equals to 6 corresponds to minus 0.378 electron volts. So there is an energy difference, of 0.1 electron volts. If we subtract this value 0.278 and 0.378, we get nearly a value of 0.1 electron volts. Whereas if we subtract n equals to 3 and n equals to 2, these energy level corresponding to,
then we can easily see that this difference is very large. So when the energy difference is large, we can easily see that the intensity is large. But if we go above the energy levels, higher states, the difference is small. So the corresponding energy or the corresponding frequency is small. So lower energy means lower intensity. Lower energy difference means lower intensity. So we get lower intensity or the weaker intensity particular photons. So the option D is correct here, that the lines are close together and weaker in intensity. One reason also we can explain that the electrons in the higher state, the probability is less, and the electrons don't jump like this in most of the bulk of the amount, like n equals to 7 to n equals to 2. This probability is less because they randomly jumps. They jump from, for example, n equals to 7 to n equals to 6, or n equals to 7 to n equals to 5. So the nearby transitions are more probable. So that's also the reason that there is weaker intensity photons. So the option D is correct here. तो यहाँ प्रॉब्लम दी गई है, इसमें कहा गया है कि बामर सीरीज जो हाइड्रोजन एटम की होती है, उसमें वेवलेंथ जब डिक्रीज होती है, तब उस कंडीशन में जो लाइंस हैं वो किस तरह से अपीयर होती हैं? क्या वो क्लोजर अपीयर होती हैं? क्या वो इक्वली स्पेस्ड अपीयर होती हैं? या वो एक तरह से फर्दर अपार्ट जो है वो दिखाई देती हैं, जैसे जैसे वेवलेंथ हमारी बढ़ती जाती है, डिक्रीज होती जाती है उस कंडीशन में। और उनकी इंटेंसिटी के बारे में पूछा गया है, क्या इस वेवलेंथ के डिक्रीज होने का इफेक्ट क्या उनकी इंटेंसिटी पे ही पड़ता है, जो फोटॉन्स निकल रहे हैं? जो हमें लाइट मिल रही है उसकी इंटेंसिटी पे भी क्या उसका फ़र्क पड़ता है? क्या वो सेम इंटेंसिटी की मिलती है, जैसे कि लोअर लेवल्स के लिए हम बात करें? क्या वो ज़्यादा इंटेंसिटी की मिलती है या कम इंटेंसिटी की मिलती है? ये भी हमें एनालाइज़ करना है। तो इस डायग्राम से हम साफ-साफ देख सकते हैं कि जैसे-जैसे n के लेवल बढ़ते जाते हैं, सबसे पहला पॉइंट ये है कि बामर सीरीज़ करस्पॉन्ड करती है हायर n वैल्यू से n इक्वल्स टू 2 वैल्यू तक जब जंप होता है इलेक्ट्रॉन। इनके नेम्स भी हैं रेस्पेक्टिवली एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा एंड सो ऑन। जैसा कि इस डायग्राम से भी इस पर्टिकुलर टेबल से भी आप देख सकते हैं, एच अल्फा लाइन करस्पॉन्ड करती है 6512 से 6612 आंगस्ट्रॉन्ग रेंज के बीच में, यानी कि एक हायर वेवलेंथ रेंज है। एच बीटा जो आप देख रहे हैं ट्रांजिशन n इक्वल्स टू 4 से n इक्वल्स टू 2 के बीच में जो होता है, तो उसमें वेवलेंथ हमें मिल रही है 4812.7 से लेके 4912.7 आंगस्ट्रॉन्ग के बीच में। इस तरह से एच गामा, एच डेल्टा, एच एप्सिलॉन, देन एच 8, एच 9 और एच 10 से 16 तक की जो रेंज है, उसमें आप देख रहे हैं कि जो हायर रेंज है हमारी वो है 3701 से 3801 आंगस्ट्रॉन्ग के बीच में। तो आप साफ साफ देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये लेवल बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे अगर n इक्वल्स टू 2 तक जो है इलेक्ट्रॉन जंप करके आता है सीधे, तो वेवलेंथ हमारी जो है वो क्या होती जा रही है, धीरे धीरे घटती जा रही है। और वेवलेंथ अगर घटती जा रही है तो आप साफ साफ देख रहे हैं कि जो लाइंस हैं वो क्लोजली पैक्ड या क्लोजली स्पेस्ड होती जा रही हैं। और अगर क्लोजली स्पेस्ड होती जा रही हैं तो ऑप्शन सी या डी में से कोई करेक्ट है। अब हमें जज ये करना है कि स्ट्रॉन्गर इंटेंसिटी की फोटॉन्स बाहर आ रहे हैं या वीकर इंटेंसिटी की लाइट जो है वो बाहर आ रही है। तो उस कंडीशन में हमें देखना होगा कि जैसे जैसे हम हायर लेवल पे जाते हैं, तो जो ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन से मतलब ये है कि हायर लेवल से लोअर लेवल में, तो जो ट्रांजिशन है उनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो स्मॉल है। और अगर एनर्जी डिफरेंस स्मॉल है उन ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग, तो इंटेंसिटी डेफिनेटली वीकर होगी। एक डाउट ये भी आता है कि n इक्वल्स टू 7 से इलेक्ट्रॉन जंप n इक्वल्स टू 2 पे भी कर सकता है, तब तो उस कंडीशन में ज़्यादा एनर्जी मिलनी चाहिए। लेकिन इस बात की प्रोबेबिलिटी कम होती है कि n इक्वल्स टू 7 से इलेक्ट्रॉन जंप करके स्ट्रेट अवे n इक्वल्स टू 2 पे आ जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जंप करके जब लोअर स्टेट में आते हैं वो रैंडमली आते हैं और प्रेफरेबली वो नियर बाय स्टेट पे जंप करते हैं पहले। और अगर वो नियर बाय स्टेट्स पे जंप करेंगे तो उस केस में जो इंटेंसिटीज मिलेंगी वो कम होंगी। साथ के साथ बिल्कुल हायर स्टेट में इलेक्ट्रॉन की जो क्वांटिटी है, उनकी जो बल्क अमाउंट है, वो भी जो है वो कम होता है एज कम्पेयर टू द n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 4 इन स्टेट्स के मुकाबले। जो और हायर स्टेट्स हैं
उनमें इलेक्ट्रॉन्स जो पहुंचते हैं वो क्वांटिटी वाइज भी वो कम पहुंचते हैं, तो उस वजह से भी जो ट्रांजिशन होंगे उनकी जो वैल्यू है, उनका जो नंबर है वो भी कम हो जाएगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम कह सकते हैं कि इंटेंसिटी जो है वो लोअर मिलेगी जैसे जैसे हम वेवलेंथ डिक्रीज होती जाएगी या एनर्जी लेवल जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, तब उस कंडीशन में वीक इंटेंसिटी जो है वो मिलेगी। सो होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।